हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। बट करेंटली वी आर विटनेसिंग अ वेरी अमेजिंग, अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज दैट्स एशिया कप। और सारे मैचेस हो गए हैं। टुमारो इंडिया इज़ गोइंग टू प्ले अगेंस्ट श्रीलंका in the final. Both these teams have qualified for the maximum time for the Asia Cup finals. India 6 बार जीत चुकी हैं, श्रीलंका 5 बार जीत चुकी हैं. So it will be interesting to see who is going to win tomorrow. Whether defending champions Sri Lanka can win once again and it can be 6 India 6 Sri Lanka, or India is going to win it again and make it 7. तो आज हम इस एशिया कप फाइनल के बारे में डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फॉर बोथ द टीम्स, व्हाट कैन बी द स्ट्रेटजी, वेदर क्या है, पिच कंडीशंस क्या हो सकती हैं और जीतने के चांसेस किसके हैं. सो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू मेक टू ऑल ऑफ़ यू. आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर अपनी वैल्यूबल फीडबैक दीजिए. अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो आप मेरे पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं. आई हैव मेड वीडियोस ऑन IPL, ऑन एशेज़, ऑन WTC चैम्पियनशिप फाइनल. सो काफ़ी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं और इनफैक्ट आप कैलिब्रेट भी कर सकते हैं कि जो मैंने कहा क्या वो हुआ कि नहीं हुआ या कुछ और था. सो ये वैलिडेशन भी हो जाएगी कि वेदर वट एवर एनालिसिस आई एम डूइंग इट्स करेक्ट और नॉट. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए. इट्स अ न्यू चैनल और अभी बहुत कम लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक न्यू वीडियोज. सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल. ग्रेट. तो एशिया कप जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी, सीरीज होने से पहले कंट्रोवर्सी थी, वेन्यू क्या होगा, मैच कहाँ होंगे. देन आफ्टर वंस इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ रेन अगेन अ लॉट ऑफ questions, a lot of heated movement, fans were thrashing organizers. उसके बाद सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए there was a reserve day, although that was agreed by all the 4 members, that is India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, who were in Super 4, and it was based on weather forecast. तो अगर आप देखें so उस मैच के अलावा कोई भी मैच वॉश आउट नहीं हुआ. या थोड़ी बहुत बारिश सब में थोड़ी बहुत हुई है, बट दैट डिडंट इम्पैक्ट द रिजल्ट, द एंड रिजल्ट. तो डेफिनेटली अ रिजर्व डे रखना वाज अ राइट डिसीजन. बट अगेन एज यू नो it created a lot of heat on social media. People start accusing ACC, ICC, ex-cricketers starting questioning. Anyways, बहुत कुछ हुआ. But अब finally we are going to witness the final of Asia Cup. So कल मैच होने वाला है. एक तरफ है डिफेंडिंग चैम्पियन श्रीलंका who are playing amazing cricket. The best part about Sri Lanka is कि जब भी वो whenever they play as an underdog, आप जब भी देखें उनको, जब भी उनको कोई फेवरेट नहीं मानता, जब भी they are struggling with their injuries and all other issues, they come up and give a very strong performance. वही हुआ इस सीरीज में भी. They won almost all the matches. They only lost against India, and the second team is of course India, जो कि सबसे ज़्यादा बार एशिया कप जीत चुकी है. and team is looking really very good, especially जब से senior cricketers they have came back from injury like Bumrah, Rahul, they have really gelled very well. तो इंडियन टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है और इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ कॉन्टेस्ट. डेफिनेटली India has to come up with some plan, some strategy to decode the spin web of Sri Lanka. Dunith wellalage ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी इंडिया के अगेंस्ट. ही took 5 including wicket of all the main batsmen like Virat Kohli, Shubman Gill, Rohit Sharma, Rahul, Pandya. So definitely he will be very high on confidence.
and Indian batsmen also, they will be they they would love to showcase their talent playing spin as well. तो हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. सो अगर हम इस सीरीज़ की बात करें, सो इंडियन बैट्समैन आर रियली इन अमेजिंग हॉट फॉर्म. ऑलरेडी 3 बैट्समैन आउट ऑफ टॉप 5 हैव स्कोर्ड सेंचुरी फॉर इंडिया. शुभमन गिल ने सेंचुरी क्रैक कर चुके हैं, विराट कोहली लगा चुके हैं, के राहुल लगा चुके हैं. Ishan Kishan played that wonderful 82 runs knock in the first match against Pakistan. Pandya ने भी उस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था. He scored around 87 runs. Rohit Sharma has already scored 3 half centuries. So इंडिया के टॉप ऑर्डर बैटिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, and definitely they can pose a very strong challenge to Sri Lankan bowlers. काफ़ी अच्छे फॉर्म में है बैट्समैन. रविंद्र जडेजा उतने अच्छे, आई मीन ही इज़ येट टू फाइंड दिस इज, बट वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू. सो फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली इंडियन टीम इज प्रीटी अश्योर. दे कैन गो एंड they can score big runs, set up a big target, or if they can chase any score. Similarly, bowling में with once like jasprit is back, उसके कारण जो एक तरह से एक चीज़ जो मिसिंग थी इंडियन बॉलिंग अटैक में, स्पेशली विद सिराज बॉलिंग फ्रॉम वन एंड, दैट इज़ बैक. अब ओपनिंग बॉलिंग काफ़ी लीथल, काफ़ी पोटेंट है विद सिराज एंड बुमराह. वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ बोथ इंडियाज़ मैच अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान इन सुपर 4. ट्रस्ट मी, दोनों मैच में पिच बॉलिंग फ्रेंडली नहीं थी. And it was, I mean, उस पहले मैच में तो इंडिया scored around 357 runs. So by no means it was a bowling pitch, but Indian bowlers bowled, especially Bumrah, Siraj bowled very beautifully in the initial overs, backed by Hardik Pandya, जो कि बहुत ही amazing all-rounder, as an all-rounder he is shaping up. Similarly, against Sri Lanka as well, India were defending a small target of 213 runs, but the way Indian bowlers started snapping 3 wickets on 25 odd runs in 6 overs, it gave a lot of confidence. So, bowling point of view, mein Siraj, Bumrah, Pandya, and not to forget Kuldeep Yadav, who is really performing amazingly well in all the matches. Last match mein he was not playing. Else I'm sure Bangladesh, they would never have scored around 265 runs. Anyways, that's a different, altogether a different discussion. So top order batting, 4 bowlers in form. That's the strength of Indian team. Definitely, they are playing some amazing cricket. They have covered all the bases. However, there are few things which they have to work upon. The first thing is lack of bowlers, or should I say lack of all-rounders. So Jadeja, so if you look at the batting order, 6th number पे पांडे आते हैं, फिर आपके रविंद्र जडेजा आते हैं. So these 7 batsmen, they are good, they are decent. After that, there's always a dilemma. क्योंकि अक्षर पटेल, he is injured, he is no longer in the squad, वो कल नहीं खेलेंगे. So it will be interesting to see कि क्या शार्दुल ठाकुर को मौका मिलता है या वाशिंगटन सुंदर. Definitely it will depend upon what kind of pitch they have, but that position is a bit tricky. Even if we consider that one of them play at 8th, then rest 3 batsmen, 9, 10th, 11th are not going to are not contributing any significant scores. अगर आप श्रीलंका का अगेंस्ट देखें, इंडिया वर अराउंड 172 for 5, but they lost 4 wickets very quickly and they were at 187 for 9. If not for some good defensive batting by Siraj and hitting by Akshar, India could have folded out within 200 runs. ऐसे बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हुआ, या वी कैन से दैट कि सेम प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन उसमें भी टेलएंडर्स वर नॉट एबल टू चेज अ वेरी गेटेबल टारगेट. सो ये एक चैलेंज हो सकता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है कि कैसे उस चीज़ को ओवरकम करें, बिकॉज
द थिंग विद द फाइनल इज़ दैट अपोजिशन हमेशा स्ट्रेटजी से आती है ताकि वो आपके मेन बैट्समैन को आउट कर सके. और वी हैव सीन अ लॉट कि स्पेशली जब भी इंडिया फाइनल खेलती है, इंडिया की टॉप ऑर्डर दे फेल, एंड बिकॉज मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर, दे ट्राई टू रेस्क्यू बट समटाइम्स दे फेल. तो ये चीज़ है एक वीकनेस जिस पर इंडिया को वर्क करना पड़ेगा. दूसरी एंड द मेन थ्रेट इज़ हाउ दे आर गोइंग टू प्ले स्पिनर्स. तो पिछले दोनों मैच में अगेंस्ट श्रीलंका इंडिया वर क्रूजिंग, but because that pitch was not that easy, ball was gripping and turning, India could not handle it. कुछ एक players बहुत अच्छे खेले थे, जैसे राहुल, he was playing pretty good, and it's not that players like Rohit, Shubman Gill or Virat Kohli, they are not good players of spin. I'm sure they will come up with their strategy, but yes, एक ये चीज़ है जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा threat हो सकते हैं. The same thing happened against Bangladesh. Again a pitch where ball was not coming on the bat. Pitch was slow, and India were not able to milk runs even against part timers. So ये एक बहुत बड़ी weakness है, and India has to work upon it, not only for Asia Cup but for the final as well. Third thing which is definitely caused India a lot of issues is their catching. Last match maybe Bangladesh was struggling, but India dropped few very simple catches. बाद में भी फील्डिंग बहुत मिसफील्ड हुई. ठीक है, हम कह सकते हैं कि अगेंस्ट बांग्लादेश इट वॉज मोर काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस मैच बिकॉज इंडिया हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड. बट सेम थिंग हैपेंड इन वन अनदर मैच, आई बिलीव अगेंस्ट नेपाल भी कम से कम 3-4 कैचेस छोड़े. सो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज इन फाइनल एंड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग टीम्स एक भी अगर आपने कैच ड्रॉप कर दिया, सो इट कैन रियली चेंज द कोर्स ऑफ मैच एंड इंडिया कैन लूज. सो ये है इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस. टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, ऑफ कोर्स their strength is their bowling. They are bowlers who have a lot of variation. They have a lot of bowlers. If you look at their team, it's more kind of all-rounder dominated. In every match they have 7 to 8 bowling options, and even their batsmen can contribute good significant contribution in the match. तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनके पास. यस, तीक्ष्णा गॉट इंजर्ड, जो कि एक बिग ब्लो है, बट अगेन श्रीलंका हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्पिनर्स. अगर तीक्ष्णा नहीं भी हैं फिर भी धनंजय डिसिल्वा है. हमने देखा लास्ट मैच में श्रीलंका ने भी 4 विकेट ली. सो या I mean they will definitely they would have loved to have Tikshna, but नहीं भी हैं तो इतने struggle नहीं होगा. They have bowlers who can create that web against Indian batsmen. Similarly, their batting, few players like Mendes, Sama Vikrama, these two players are really in a very good form. Aslanka, he has scored the maximum runs on 5th or below 5th position since last World Cup. All across the world, जब से उन्होंने डेब्यू किया है उनसे ज़्यादा किसी ने नहीं बनाया 5th और से नीचे पोजीशन पे. So it is definitely a very good thing. Of course, although they are not host, लेकिन श्रीलंका में हो रही है, कोलंबो में फाइनल होगा, so they know the local conditions. अगर उनको ये भी पता है कि अगर बॉल स्पिन हो रही है, still they know how to tackle it, how to play it. So that will be something which will be really beneficial for them. Talking about weaknesses of Sri Lankan team, so सबसे बड़ी weakness अगर आप उनकी टीम में देखें, so most of their batsmen, no doubt, they play because their coach Silverwood, who was England coach earlier, he always rely on playing more all-rounders. So because of that they have options in bowling and batting as well. लेकिन सारे जो उनके batsmen हैं, they don't have good averages, और सिर्फ I will say that Mendes and Sama Vikrama हैं जो टिक के खेलते हैं. Else, most of them they score 20s 30s and they just lose their wicket. So ये एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, स्पेशली अगर आप एक बड़ा टारगेट चेस कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट. जैसे श्रीलंका अगेंस्ट पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका वर क्रूजिंग, बट
uh, all the batsmen, they could not just you know uh, have that temperament to finish the match. They tried to do हादाकिरी, वो चाहते थे कि जल्दी मैच ख़त्म करें, बड़े शॉट के लिए गए, and one by one all the set batsmen got out. It was in the end, it was they were fortunate as well कि वो एज लग के चौका गया और थोड़ा बहुत पाकिस्तान के एंड से भी मिस्टेक हुई. So that's one area they have to work upon. दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और आई एम श्योर दे विल बी कंसर्न्ड, इज विद द फॉर्म ऑफ देयर कैप्टन Shanaka. If you look at Shanaka's performance last year, he was in amazing form. In fact, January, February maybe, when they came to India for the 3 one-day series, Shanaka was the only player from Sri Lanka who played good in both T20 and one day. He was, most of the times, he was the lone warrior who kept on scoring good runs. However, उसके बाद से वो बहुत ही बुरी फॉर्म में, I mean, from World Cup qualifier to all those matches, he's not able to get the same kind of rhythm, which is really putting Sri Lanka down. Similarly, उनकी bowling, no doubt, he's a decent bowler, but again, his bowling is not something that he's going to take 10 overs in every match. I mean, he may or he may not play. So yeah, form of their captain Dilshan Shanaka will definitely be something they will be concerned of. Yeah, third thing, or the third weakness which Sri Lanka definitely is going to figure out will be, of course, their seam attack. No doubt. उनके स्पिनर्स बहुत अमेजिंग परफॉर्म कर रहे हैं, बट their seamers were not able to back them up, just like maybe Sri Lankan captain was looking for. Sorry. अगर आप देखें तो against India they were pretty ordinary. Paithwana है, who is an amazing talent. We all see IPL में how he helped CSK in every match, but ODI में maybe because Indian players have seen him in IPL, so he is not able to make that much of impact against India. So ये एक और चीज़ है, but again definitely at the end of the day you are looking to take wickets. तो अगर वो स्पिनर से मिले, पेसर से मिले, it hardly matters. और वहाँ definitely Sri Lanka has an edge because they have a lot of bowlers. So अगर किसी एक बॉलर का ऑफ डे भी है, स्पेशली सीमर का, दैट विल बी कवर अप. जैसे हमने देखा पिछले मैच में अगेंस्ट इंडिया, रजिता ही गेव अ लॉट ऑफ रन्स, सो उनको फिर से, बट बिकॉज श्रीलंका हैव सो मेनी बॉलर्स, दे डोंट हैव टू कॉल हिम फॉर अनदर स्पेल. in fact last के overs भी spinners ने डाले, so that's an edge for Sri Lanka. So definitely it's going to be a very interesting match. Talking about weather forecast is, again, जैसे सारी series में हुआ, there is a chance, possibility of a rain, although it's not going to be a very heavy rain, but yes, वो forecast है. And इस मैच के साथ भी आपका एक रिजर्व डे है, so अगर just in case match is not is interrupted और मैच नहीं हो पाया तो मंडे को होगा, just like इंडिया पाकिस्तान के मैच हुआ. टॉकिंग अबाउट पिच, अगर आप देखें तो पिछले 2-3 मैच अगर आप देखें तो नाउ पिच इन कोलंबो इज़ गेटिंग स्लोअर. ये इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि फाइनल क्या एक फ्रेश पिच पे होगा या फिर उस किसी स्लो पिच पे होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इट विल बी अ बेनिफिट फॉर श्रीलंका. But again, in my point of view, pitch will be bit on a slower side. I would say that a score of 260-270 will be a good one अगर pitch slow होती है, और definitely जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करने की कोशिश करेगा ताकि they can set up a target. Talking about chances, see, definitely it's tough to forecast or predict exactly कौन जीतेगा, लेकिन हाँ, अगर आप वनडे की बात करें so India have a clear edge on Sri Lanka. So in last 15-16 मैचेस श्रीलंका सिर्फ 2 मैच जीती हैं. Not to forget लास्ट मैच में इंडिया ने श्रीलंका का जो 14 मैचेस की सीक्वेंस भी इंडिया ने ही तोड़ी थी. So from that point of view, India definitely have that psychological edge. However, on the same hand, in last few years,
इनफैक्ट आफ्टर एशिया कप इन 2018 विच इंडिया वन, उसके बाद से इंडिया ने कोई भी मल्टी टीम टूर्नामेंट नहीं जीता है, वेदर इट्स ICC और एनी अदर टूर्नामेंट, एंड दे हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फाइनल्स. तो वो भी एक इंडिया के ऊपर होगा. डेफिनेटली अगर इंडिया कल जीतती है, एशिया कप जीतती है, सो इट विल गिव देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कंसिडरिंग वर्ल्ड कप आ रहा है. दैट टैबू, दैट मंकी विल बी ऑफ द बैक कि फाइनल में आके फाइनल नहीं जीत सकते. तो शर्मा विल बी द हैप्पीस्ट पर्सन. सिमिलरली अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका, लाइक आई सेड, जब भी whenever they are considered as an underdog, they perform amazingly well. So ऐसे कल भी वो कर सकते हैं. They have a very good decent team who play more like a team. They don't have superstars in their team, but they have a team with good players. So they play as a team. So definitely they are going to give a tough fight. So of course if I have to give odds, so it will be 60-40, 60 for in India's favor and 40 for Sri Lanka. But yes, it will be pretty close. It will depend upon what weather conditions we are going to have. I mean, currently everything look rosy, and what kind of pitch we have, because in those scenarios toss भी बहुत important हो जाता है. So yeah, that's all into this video. मैं कल फिर आऊँगा. कल के वीडियो में हम देखेंगे कौन जीता और क्या हुआ, उसके एनालिसिस. So thank you very much for watching my video, and please subscribe to my channel, and you have a great day. Bye, take care.